Hello everyone, welcome back again. It's Achal Chauhan here. Now today we will study about second chapter, but before starting second chapter, I want to ask you whether you have completed your first chapter question answers or not in your notebook. I hope you all have done. So let us discuss with the second chapter. In this chapter we will study about queries, forms and reports. So let us start. The first one is MS Access 2007. So MS Access is a kind of software application or application software that is mainly used to create database. Now the question arises, what is database? So database is the collection of tables. Database is the collection of tables that contains data of same type. तो डेटाबेस क्या होता है? बहुत सारे डेटा का कलेक्शन जो सेम टाइप का होता है, उसका कलेक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना is called what? Database. So to create database we need a software which is known as MS Access. So we will study 2007 version, right? So when you will open MS Access window, it will look like this, as you can see here. Now there is one option, blank database. If you want to create your own database, so you will click on blank database. When you will click on blank database, one option will appear here, that is file name. Look at here, file name, and here you have given the name of the file as employee, or you can write your name also here. After specifying your name in the file name box, you will click on create option or create tab. Clear? And the database by your name will get created. Now inside that database you can create a number of tables, and that tables will get linked to each other. Moving on to the next, introduction. Now in this chapter we will study about what are queries. So queries in MS Access produces selected records from a table that meets certain predefined conditions. It is used to apply filter in a table's data to select the records from a big collection of records that meet certain condition. Now before getting the meaning of these 2 points, let me make it more clear with the help of one example. Then we will again study these 2 points. Now look at here, this is actually a table, and this table is divided into rows and columns. And now many of you will definitely be confused about which are known as rows and which are known as columns. So if I say about horizontal entries, so that is known as rows. If I say about vertical entries, so it is known as columns, right? Now next is we will study about records and fields. Record is what? Record is the collection of, or we can say record means the information about any person. Information about any person is called record. Like here, this is record number 1. That is the information of first person. Now for the second person, information is this. So it is second record. Moving on to the third one, here Nana, it represents to record number 3, and here record number 4 about Rudra. So that means the complete row is called a record. So how many records are there total? All in all 4 records are here, right? So record means collection of information about a single person. Now moving on to fields. What are fields and why we are discussing all these things? Actually all these terms we will use, okay, later on. So it should be clear to you that what are fields, what are records, what are rows, what are columns, what is table. All the things should be clear to you. So rows clear हो गए. rows क्या है आपकी? ये 1 2 3 4 5 5 rows हैं. columns कितने हैं? 1 2 3 4 5 columns हैं. How many records are there? Records are 4, only 4, not 5. records are 4. क्यों? Because record means the collection of information of a person. किसी person की information होना ही क्या कहलाता है? record. So हमारे पास क्या information of 4 person only, that is Anshu, Aryan, Naina and Rudra. So 4 records are there. And what are fields?
Fields means the name of the column. Name of the column. That means the information that you are presenting, which type of information you are going to present about a person is called a field, like name, class, phone number, address, gender. So all these gives the information about a type of information about a person. So these are known as fields. Fields, fields, right? Now inside it one more term is there, that is values. Values क्या होती हैं? Individual, you can say part of the information. Part of the information is called value. For example, 7, this is a value. If I say F is a value. If I say this phone number is a value. If I say this name Nana is a value. ठीक है. सो इंडिविजुअल जो एक एंटिटी है या इंडिविजुअल पार्ट, हम स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं उसको, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू. ओके. So this type of question will come in your exercise assessment C, that identify records, values and fields. Now I hope it's clear to you that fields are these: name, class, phone number, address and gender. These are fields. If I say about records, so this is record number 1, record number 2, record number 3, record number 4. If I ask you identify the value, so individual part like Anshu is a value 8, this phone number, this Lohari Sarai, this F, all these are considered as values, right? Now for that table actually we can get the data of a single person. So now we will start about queries. So if I say that inside this table give me the information of those students who study in class 8th. So that is my query, that is my question for which I want the solution. ठीक है. So my condition is what? Who are studying in class 8th, that is the condition. ठीक है. So I will get what? I will get the information of these two students, this one and this. ठीक है. So query means what? Query is a kind of condition that is used to filter the data from a table. यही हमने डिस्कस किया था in the previous slide. Now let me come to this. Here a query in MS Access produces selected records from a table that meets certain predefined condition. Now which condition I have applied? I applied the condition that who are studying in class 8th, जो class 8 में पढ़ रहे हैं उनकी information मुझे चाहिए, right? तो मैंने query यही लगाई है उसके ऊपर. तो query लगाने के बाद out of these 4 records actually we are getting 2 records, first and second record. So query का मतलब होता है जो filter करके देता है हमको डेटा. अगर यहाँ पे suppose करो 50 students होते हैं, तो 50 स्टूडेंट में से many of the student may be possibility that they are studying in class 8, so I got that data only. ठीक है. तो ये हो गई हमारी क्या? query. Moving on to next. And one more thing that I want to tell you inside this, yes, one more thing is left, that is field name. One more question is there in your exercise that to identify the valid field name. ठीक है. Now when we specify the field name, so how we can give it? Like name is a valid field name. ठीक है. There are some rules to define the field name, like field name cannot take this full stop sign, dot sign cannot be included. For example, if I say phone number dot, then this is invalid field name because dot sign is not allowed in field name when you will declare it. Next is space is not allowed. Space is not allowed. For example, if I write first, FIRST, first space name, first name, अगर मैंने ये लिखा instead of this name, suppose I am writing first name, so this is also invalid field name. क्यों? Because space is there, this, which is not allowed, right? Next one, any other special character is not allowed. For example, exclamation mark. If I write here class exclamation, then this is invalid again, not allowed. If I write apostrophe s, apostrophe sign, है ना, apostrophe, that is also not allowed. For example, if I write suppose gender apostrophe s, यहाँ पे gender apostrophe s if I write,
ठीक है, that is also not allowed. So any other special character, any space, any full stop is not allowed while you are declaring the field names. ठीक है. Now in the assessment C, in assessment C, open it in your book. Everyone is requested to open their books, please. ठीक है. After that only, because that will be good for you, because in your book examples are given and even diagrams are given more clearly. So now look at assessment C, B exercise. Question is, identify the valid field name, right? So you have to identify it. So write it answers there, and at last you check the answers. I have written all the answers at last in the slides. So right now you write all the answers. I am giving you 1 minute. So write all the answers there, valid and invalid, which one is valid and which one is not valid, on the basis of the rules that I told you right now. Stop the video and do it. Next is how to create a query. So we have discussed what is query. Query is a kind of question that is used to get some amount of data from a table based on some condition. Now how to create a query. So there are some steps. In your book it is given. Look at in your book also at the same time. First is open a database and click on create tab. First option is click on create. I told you how you can create your own database. Blank database पे जाने के बाद आप फाइल नेम दोगे, क्लिक करोगे create पे, आपका database बन जाएगा. उसके बाद आप अपनी tables बनाओगे. ठीक है. उसके बाद आपने क्लिक किया create tab, then click on query design, then choose a table on which you want to apply the query. Like in the previous slide, I have chosen a table of student. ठीक है. So in same way you will choose a table and then click on add option and then click on close option. So these are the steps, and here I have put one diagram also. Look at this diagram. Here total actually 6 steps are there, but in your book 5 are there. But don't get worry about it. First step is click on create tab. Second step, click on query design. Third step is actually not given. Directly in the third step it is given कि click on table. ठीक है. तो आपको चूज़ करना है टेबल को. So this is actually step number 3. So here you will select it, student table. Then this is step number 4, click on add. Then this is step number 5, click on close. So that means 6 steps are not given here, only 5 are here. So यहाँ पे सिर्फ ये वाला आपका ऑप्शन एक skip है. ठीक है. That is not compulsory to mention. So these are the 5 steps. Done. When you will click on close button, so one type of query window will get appear in front of you when you will click on this close. So query window जो आती है वो कैसी होती है, देखो how it appears. Now query window, when it will get appear in front of you, it will get divided into 2 panes, top pane and lower pane. Top pane and lower pane. Top pane shows the table chosen and lower pane shows the design grid. Now one by one we will discuss this. Top pane and lower pane. Look at here. This is the query window now. Okay. Now here on this query window, this is the top pane. This complete is what query window, QW, query window, that is divided into 2 parts, top pane, this part, top pane, and this lower part, it is called as lower pane. Fine. Where the top pane shows the table chosen. जो आपने टेबल सिलेक्ट की है वो टेबल शो होगी. हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है पेशेंट टेबल, तो पेशेंट शो होगी. इफ़ यू विल सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल, देन स्टूडेंट टेबल विल कम हेयर एंड ऑल द फील्ड्स दैट यू हैव सिलेक्टेड, ठीक है, ऑल द फील्ड्स दैट यू हैव टेकन इनसाइड दैट टेबल विल अपीयर हेयर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, नेम, क्लास, फ़ोन नंबर, जेंडर. ठीक है. तो दैट ऑल द फील्ड्स विल कम हेयर, depends whatever you have taken. Now next is lower pane. Lower pane will contain some entries like field, table, sort, show, criteria, or.
ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स. सो व्हाट इज द what you have learned in this slide is what is query window, and it is divided into how many panes? Two panes, top pane and lower pane. Top pane which shows the name of the table, and the second one which shows the query design. ठीक है, now we will discuss query design in detail. Look at here for query design part. Yes, now you have selected one table. यहाँ पे आपने एक टेबल को सिलेक्ट किया. So that table selected table will appear here, and all the field name also. Now first one is field. Field means the name of the columns. अब अगर आपने टेबल लिए स्टूडेंट, राइट, तो स्टूडेंट टेबल में आपने जो भी कॉलम्स लिए थे दैट विल कम हेयर. सो आपने क्या क्या कॉलम्स लिए थे? फर्स्टली सपोज आई हैव टेकन रोल नंबर, सेकेंड सपोज आई हैव टेकन नेम, third suppose I have taken class, next I have taken suppose phone number. So that all the columns name will come in the field column, right, field row. Next is table. Table में क्या आएगा? The name of the table. What was the name of the table in the first example which I discussed? Student. ठीक है, तो यहाँ पे उसका name क्या आ जाएगा? Student. Here also student, and here also student. Okay, now next one is sort. Sort means after getting the result, whether you want to display the data in ascending order or in descending order or in normal order. If you will not write here, if you will not write anything here, then it will display normally. ठीक है, normally means just like your table previously it looks like. ठीक है, जैसा आपका पहले दिखती थी table, it will get displayed in the same way. But if you want to arrange the data in ascending or descending order, then you can write it. Means you can write here what? Ascending or descending, depends. If you are applying the ascending suppose on roll number, so roll number क्योंकि कैसे होते हैं? on the form of numbers, in the form of numbers, तो वो numbers में ascending descending arrange करेगा. और suppose you are going to apply on name, है ना, sorting, तो उसके basis पे आपका alphabetically it will sort. That means from A to Z or from Z to A, depends that on number you are applying the sorting or on alphabets you are applying the sorting. Next is show. Next is show. Show will show only some amount of fields. Means if suppose in a table you are having 50 columns, in a table suppose if you are having 50 columns and you don't need all the 50 columns, you need only few columns, आपको सिर्फ कुछ columns चाहिए, आपको 50 columns की ज़रूरत नहीं है. So in that case you can check that particular name of the field. For example, here see check boxes are given here in the show column. ये दिया हुआ है इस तरीके से, right? If during the output, during the result, you want this roll number should displayed in the output, then you can make it check. आप इसको टिक कर सकते हो. आपको चाहिए कि नेम नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है, आउटपुट में नेम शुड नॉट अपीयर, तो यू विल अनचेक डेट. ठीक है, क्लास आपको चाहिए, क्लास आना चाहिए, क्लास शुड बी शुड अपीयर इन द आउटपुट. येस, इफ आई वांटेड आई कैन मेक इट चेक लाइक दिस. सो शो के अंदर आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो? द नेम ऑफ द फील्ड्स विच यू वांट टू शो इन योर आउटपुट. Next one is criteria. Criteria means condition. Means first example में I applied one condition. What was the condition? That I want the information of those student who study in class 8th. जो class 8th में पढ़ते हैं उनकी information चाहिए. या फिर I can also make a condition in this way like whose age is greater than 13. I want the record, I want the name of those student who study in class whose age is greater than 13. ठीक है, सो क्राइटेरिया में हम एज कॉलम पे अप्लाई करेंगे कंडीशन. लाइक फॉर क्राइटेरिया हेयर ऑन एज आई एम अप्लाइंग द कंडीशन. सो इन दिस कॉलम ऑल्सो वी विल राइट व्हाट? ग्रेटर देन 13. ग्रेटर देन 13, राइट. सपोज इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई द कंडीशन ऑन स्टेट, if I want to apply the condition on state, that I want the information of those student who belongs to state UP. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे क्राइटेरिया के अंदर? क्राइटेरिया कॉलम के अंदर ये
क्राइटेरिया रो और स्टेट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इक्वल टू यूपी. So that means we have applied the condition in which column, state column, right? So particular उसी column में you will apply the condition. ठीक है. Now next is what, or is used to apply multiple criteria or multiple conditions together. Now we can add the criteria or we can specify the criteria using and using or. Criteria can be applied in two ways, and or. And क्या बोलता है, suppose I want to apply three conditions. ठीक है. So and says that all the three conditions must met. तीनों conditions satisfied होनी चाहिए. And says, or condition says what, कि any one of the condition if satisfied you will get the answer. ठीक है. यानी कि हम दो तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं, एंड को यूज़ करके या फिर और को यूज़ करके. बट एंड में अगर आप कंडीशन दोगे सो इट मीन्स ऑल द थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. बट और सेज इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन यू विल गेट द आंसर. ओके. नाउ come to the next. Now all these points we have discussed already, like what are fields, table, short, show, criteria and or. Done. Moving on to the next. And or criteria done. Now how example to create a query. For this actually you refer to book also, because in book exam that diagram is given, so that will get more clear. First is select the desired field. अब क्वेरी अगर आपको क्रिएट करनी है, जैसे मैंने अभी क्वेरी क्रिएट की ना कि आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड ऑफ दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू क्लास 8 या फिर हुज एज इज ग्रेटर देन 13. आपको ये कंडीशन लगानी है स्टूडेंट टेबल पे, तो आप कैसे लगाओगे. तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द डिजायर्ड फील्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द फील्ड रो इन द डिज़ाइन ग्रिड. सबसे पहला जो आपका डिज़ाइन ग्रिड आपने शो किया था मैंने इस तरीके से, डिज़ाइन ग्रिड, व्हाट वाज द फर्स्ट रो, फील्ड रो. तो फील्ड रो में आपको सेलेक्ट करना है द नेम ऑफ द फील्ड्स विच यू वांट टू शो, विच यू वांट टू शो इन दी आउटपुट. ठीक है. आपको आउटपुट में कौन कौन से कॉलम्स चाहिए आपको उसको शो करना पड़ेगा, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लिया. ठीक है. सेकेंड वन इज चूज द ऑर्डर ऑफ शॉर्टिंग, इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. देन स्पेसिफाई द क्राइटेरिया. व्हाट इज द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मी, हुज एज इज ग्रेटर देन 13. अब आप एज कॉलम के अंदर, एज कॉलम था, यहाँ पे साइड में क्या था, क्राइटेरिया लिखा हुआ था, तो आप उस पर्टिकुलर में क्या लिख दोगे, ग्रेटर देन 13. ठीक है. नाउ फोर्थ इज क्लिक ऑन रन. रन आपको क्या मिलेगा, एक रेड कलर का साइन मिलेगा ऊपर टॉप में इस तरीके से, एंड उसका आगे लिखा होगा रन. सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस एक्चुअली द क्वेरी विल गेट रन एंड यू विल गेट द आउटपुट. आपको आउटपुट मिल जाएगा क्या, कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जिसकी भी एज 13 से ग्रेटर है, उन पर्टिकुलर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे दैट सेटिस्फाइज दिस क्राइटेरिया ऑफ एज ग्रेटर देन 13 विल गेट डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू. क्लियर. With the example it is given, please refer to your book one more time I am telling. Now next is MS Access forms. Yes. So the graphical representation of table is called form. Graphical representation of table is called form. And form क्योंकि graphical representation are very easy to understand. किसी भी चीज़ का ग्राफिकल फॉर्मेट होना, उसको समझना, वो उसको बहुत ही ज़्यादा ईजियर बना देता है. दैट मीन्स ईजी टू इंटरप्रेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो हमारे पास फॉर्म्स क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड विच इज़ यूज टू ऐड, modify and remove the records in a table. If you want to modify some data, you want to update some data or want to remove some data from the table, then we will use what, form. Now steps to create a form. First step is click on create tab. Second step is click on form. ठीक है. Look at here, steps I have given. This is how you will do. Click on create first step and click on form second step. ठीक है. And this is how your form looks like. This is the form. अब ये एक फॉर्म है जिसमें जो कस्टमर है दैट इज द नेम ऑफ द टेबल. इफ यू आर क्रिएटिंग स्टूडेंट टेबल सो द नेम विल कम स्टूडेंट एंड हियर द नेम्स ऑफ द फील्ड विल कम. जो भी आपने लिए हैं, हमने क्या लिए थे, व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन नेम, रोल नंबर सपोज, क्लास, phone number and gender, right? So all the field names will appear here, and you can write the entries also, like name this, roll number this, class this, phone number this and gender this. ठीक है. इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो. So this is how the form looks like actually. Now
one more thing that was left is types of views of form. So there are three types of views फॉर अ फॉर्म, यानी कि फॉर्म यू कैन व्यू इन थ्री वेज. आप तीन तरीके से फॉर्म को देख सकते हो, फॉर्म व्यू, डिज़ाइन व्यू, लेआउट व्यू. क्लियर? नाउ लुक एट हियर. फॉर्म व्यू, इट इज़ यूज टू टाइप और मॉडिफाई द डेटा. जो अभी डिस्कस किया था हमने, दैट वी हैव डिस्कस दिस वन, दिस इज एक्चुअली व्हाट? फॉर्म व्यू. दिस इज व्हाट? फॉर्म व्यू. ओके. नेक्स्ट, design view, used to modify the design of a form. If you want to change the structure of a, that means the external layout or external structure of a form, then you will use what? Design view. Next one, layout view. Layout view is used to modify the format of a form using auto format gallery. Now look at here, हम क्या बोल रहे हैं? Modify the format. फॉर्मेट को चेंज करने के लिए होता है यूजिंग ऑटो फॉर्मेट गैलरी. दैट मीन्स इफ यू वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ फॉर्म, if you want to change the style of a form, then you will use layout view using auto format gallery. Now look at here, one diagram I put here, auto format gallery, this one, and from here you can actually select any one of these styling for your form. Choose any one. ठीक है. So this is how you can change the layout. आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हो. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लेआउट व्यू. नाउ नेक्स्ट, रिपोर्ट्स. Report is used to present a table in printed form. Now, after creating the table and then you have created form. Now, when you will print your form, so you should know that how it actually looks like when you will get the print out of it. जब आप उस पर्टिकुलर टेबल जो आपने फॉर्म बनाया है, जब आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे, सो वो एक्चुअली कैसा दिखेगा. ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर दैट वी क्रिएट रिपोर्ट. सो रिपोर्ट मीन्स to present the table in the form of that means in the printed form you can say. ठीक है. कि जब उसको प्रिंट करेंगे तो वो किस तरीके का दिखेगा, उसके लिए हम रिपोर्ट का यूज़ करते हैं. ठीक. अब रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए अब रिपोर्ट क्रिएट भी करनी पड़ेगी जब इफ़ आई वांट टू सी कि किस तरीके से आपका रिपोर्ट दिखने वाला है. ठीक है. फॉर पर्टिकुलर फॉर्म के लिए आपको कैसे दिखेगा रिपोर्ट, तो उसको क्रिएट भी करना पड़ेगा. तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है क्या? क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन रिपोर्ट. लुक एट हियर, picture is not that much clear. Click on create tab and click on report. When you will do these two steps, first step and second step, जैसे आप report option पे click करोगे, you will get the next window. Look at here, outlook of report. This is how your report will look like. तो आपको ये पता चल गया before getting actual print out, you will come to know that my report whichever I have prepared will look like this. ठीक है. सो व्हेन आई विल टेक द प्रिंट आउट, मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा. तो ये तरीका होता है कि हम प्रिंट मतलब फाइनली प्रिंट आउट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो दिखेगा, उसकी अपीयरेंस किस तरीके की होगी. सो दिस इज द आउटलुक ऑफ रिपोर्ट. ओके. Now, types of report view. That means report can be viewed in 4 ways. That is report view, print view, layout view and design view. Fine. And now this was the last topic. And one more thing, slide numbers I have mentioned in the question answers, and slide number is this one. On every slide you will get the slide number. Here also, look at here, slide number, here it is. Okay. So now next is, this was the last topic. Moving on to the question answers. First one is oral question answers. First answer, slide number 3, point number 1 only. Only point number 1 you have to write on slide number 3. Second answer is on slide number 7. Next one, quiz questions. First answer is auto format option in the layout view is used to change the format of a report. Second answer is database is an organized collection of data. Write it and pause the video to write the answer. Next one, fill in the blanks. First answer form, then report, then query, then design.
form, report, query, design. Next, MCQs. First answer or, then criteria, then show, then and. Or, criteria, show, and. Very short. First answer, navigation bar is used to access the records on a form. Next answer is on slide number 13 and you have to write it from a form up to of a table. कहाँ से कहाँ तक लिखना है? अ फॉर्म से लेकर टेबल तक. ओनली डेफिनेशन, यू हैव टू राइट ओनली डेफिनेशन. उस स्लाइड पर और भी है, स्टेप्स भी हैं, स्टेप्स टू क्रिएट अ फॉर्म. सो यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग एल्स, ओनली डेफिनेशन. सिर्फ कहाँ से कहाँ तक लिखना है? फॉर्म से लेकर टेबल तक. दैट्स इट. नेक्स्ट, short answers. Slide number 13, only names. Second answer, slide number 24. Now in both the answers above, firstly write the answer from question, then write names only. It means what कि आपको दोनों में पूछे गए होंगे कि व्यूज़ बताइए. जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि फॉर्म्स व्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज़ आर देयर टू व्यू अ फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्टली यू विल राइट द क्वेश्चन, देयर आर 3 व्यूज़ ऑफ अ फॉर्म विच आर. ठीक है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करके आर लास्ट में ऐड ऑन करके आर, देन यू विल राइट द नेम फर्स्ट, second, third, right? Same for the second question also, you will write the answer. So from question you will copy, firstly आपको कुछ पोर्शन क्वेश्चन से लिखना है, उसके बाद आर लगाकर आर या इज वॉट एवर इज देयर इन द क्वेश्चन गिवन, उसके बाद आप लिख दोगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स. फर्स्ट आंसर स्लाइड नंबर 9. Full answer you have to write on slide number 9. Then second answer is on slide number 5. All points you have to write it. Moving on to next, assessment C. This one also you have to do in your copy because this will also come in your exam. Okay, for the first chapter you have not done assessment C because that was the lab activity. So if in assessment C any lab activity will be there, then you need not to write it in the notebook. But if in assessment C any work is there that you can do in your notebook, then you have to write it. Only MCQs and fill-ups. MCQs and fill-ups no need to note down in your copy, but rest of the things like oral question, quiz question, very short, long and assessment C also, everything you have to do. ठीक है, तो आपको ये भी असेसमेंट सी भी करना है. असेसमेंट सी में आपको इसमें पूछा गया है कि रिकॉर्ड, फील्ड और वैल्यू आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो लुक एट हियर. रिकॉर्ड होता है क्या? रिकॉर्ड मैंने बताया था इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन. सो इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन. फील्ड क्या होता है? नेम ऑफ द कॉलम, लाइक रोल नंबर, नेम, इंग्लिश. एंड वन मोर थिंग, इफ इन दी क्वेश्चन रोल नंबर के आगे अगर डॉट लगा हुआ है ना, देन ओनली यू राइट डॉट, अदरवाइज नॉट. ठीक है, रोल नंबर के आगे डॉट इज मेंशन देयर, देन ओनली यू राइट इट, अदरवाइज नो नीड. एंड देन वैल्यूज मीन्स पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जैसे कि 24 है, नैन्सी है, 72 है, दीज ऑल आर वैल्यूज. सो यू विल राइट इट हेयर. Same for the second part also, you need to identify what are records, what are fields, what are values. So this is record, this is field and this one is value. Here also phone number may, if in question it is given, then write it, otherwise no. And if you don't have book at your home right now, so no need to write full stop here after phone number and after roll number. Simply you write the answer if you don't have book. Okay, now next one, आइडेंटिफाई द वैलिड फील्ड नेम्स. हियर इट इज़. आपको मैंने बताया था ना फर्स्ट स्लाइड में, आई टोल्ड यू दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द वैलिड और इनवैलिड फील्ड नेम. सो हियर इट इज़. फर्स्ट आंसर इज इनवैलिड बिकॉज अपोस्ट्रोफी साइन इज देयर, सो इट इज़ नॉट अलाउड. सेकेंड इज इनवैलिड बिकॉज एक्सक्लेमेशन मार्क इज देयर. एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये, एक्सक्लेमेशन मार्क इज सॉरी अपोस्ट्रोफी मार्क्स इज दिस. एंड थर्ड इज इनवैलिड बिकॉज स्पेस इन बिटवीन नेम इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, देन फोर्थ वन वैलिड है, फिफ्थ इज वैलिड है, सिक्स वन इज इनवैलिड बिकॉज फुल स्टॉप इज ऑल्सो नॉट अलाउड. लाइक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस किया ना, फोन नंबर एंड रोल नंबर एंड आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग फुल स्टॉप, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. दैट्स वाई इट्स इनवैलिड नेम. नाउ दिस chapter is over, everything we have done. So up to here you have to do all the things in your copy, plus one more thing, full forms. Full form you have to write in your copy
yourself, because full form will definitely, it will come. And if you are getting any shortcut keys also, then also you have to write it differently. Means in every chapter you have to write full form as well as shortcut keys if given. So for the first chapter also you write it. In the previous video I forgot to mention it, so you write the full form also in your first chapter, and if you are not having space then you can add on to the second chapter itself, no problem. ठीक है. So full form chapter के बीच में से आपको जो भी मिल रही है आपको करनी है. ठीक है. और one more thing, words to remember no need to do. Words to remember, you have to prepare only for your half yearly annual exams and for your unit test, not for this means not to write in the copy. Don't write it. ठीक है. So question answers and all you have to do including assessment C. So this was all about it. So I hope this chapter is clear to you. In the next video we will start third chapter. Thank you.